हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज मैच द कॉलम. कॉलम 1 हैव मॉलिक्यूल्स BeCl2, BCl3 एंड AlCl3. सो इस गिवन क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना है. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा इस गिवन क्वेश्चन का, दैट इज वसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. It is valence shell electron pair repulsion theory. So let's just start the solution. Very first molecule we have here is BeCl2. So in column 2, option P is 3-centered 4-electron bond is present in dimer. So जब भी BeCl2 dimeric form में present होता है, yes, यहाँ पे 3-centered 4-electron bond present होता है. इस bond को 3-centered 4-electron bond कहते हैं. ये भी एक 3-centered 4-electron bond है. So P is correct for BeCl2. Next, having sp3 hybridization in hydrolyzed product from central atom in basic medium. So BeCl2 का पहले हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. इसका रिएक्शन पानी के साथ, वाटर के साथ, ये प्रोडक्ट बनेगा. whole 2 negative. Further, when it reacts with NaOH, it forms BeOH whole 4 2 negative. Yes, तो यहाँ पे बेरिलियम sp3 hybridized होगा. Again, Q is also correct for BeCl2. Then R is planar in its formation. बिल्कुल करेक्ट है. BeCl2 planar होता है because it has linear geometry. So R is again correct. Linear geometry of BeCl2. तो एक ही प्लेन पे सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. That's why R is also correct. And the last is change in hybridization of central atom during dimerization. So जब ये डायमर बनाता है तो BeCl2 में, जब मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये डायमराइज्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे BeCl2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. So in its dimeric form it is sp2 hybridized. So sp hybridization से ये sp है, sp से sp2 में चेंज रहेगा. So again S is also correct for BeCl2. Next, BCl3. अभी हम BCl3 के लिए चेक करेंगे. P is 3-centered 4-electron bond is present in dimer. First thing, BCl3 कभी भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से p पाई ओवरलैप होता है. No 3-centered 4-electron is present because BCl3 do not undergo dimerization. BCl3 do not undergo dimerization. So P करेक्ट नहीं होगा इसके लिए. Next we have having sp3 hybridization in hydrolyzed product from central atom in basic medium, which is correct. BCl3 का जब हम hydrolyzes product बनाएंगे in the basic medium, then it will be sp3 hybridized. So BCl3 का hydrolysis product is, it will be BOH whole 4 negative.
in the basic medium, right? So this will be sp3 hybridized. ये sp3 hybridization आप देख सकते हैं इसका. This is BOH whole 4 negative. This is sp3 hybridized. So Q is correct for BCl3. Next, planar in its formation. Yes, BCl3 sp2 hybridized होता है तो ये planar होगा. sp2 so planar. Trigonal planar geometry हो गया. So again, R is correct for BCl3. Last is change in hybridization of the central atom during dimerization. जैसे मैंने आपको बताया BCl3 dimerize नहीं होता, so यहाँ पे हम hybridization की बात ही नहीं करेंगे dimeric form में. Next comes AlCl3. So for AlCl3 3 centered 4 electron bond is present in dimer. Yes, बिल्कुल dimer बनाता है ये. For AlCl3 I am writing. It exists as Al2Cl6. Al2Cl6 have 3 centered 4 electron system. Three centered 4 electron. So P is correct. P is correct for AlCl3. Having sp3 hybridization in hydrolyzed product from central atom in basic medium. So अभी हम इसका hydrolyzed product check करेंगे. AlCl3 का hydrolysis will form AlOH whole thrice. In basic medium, it will form AlOH whole 4 negative, single negative. Yes, so this is again sp3 hybridized. So Q is again correct for AlCl3. Planar in its formation. So whenever it is present in its monomeric form, जब भी अपनी monomeric form में present होगा, ये planar है, ये sp2 hybridized है. Again, this is planar. So R is also correct for AlCl3. Last is change in hybridization of the central atom during dimerization. तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसकी डायमेरिक फॉर्म बताई AlCl3 की, सो यहाँ AlCl3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ इसकी डायमेरिक फॉर्म में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो अगेन S is also correct for AlCl3. S is again correct. So that's the final answer. I hope the solution of the given question is clear to everyone. Thank you.